लिंक ऑन कर सकते झालेलं? हा. लिंक येते का तुझ्या हो, ताईंनी सबस्क्राईब केला होता. येणार. लिंक आली असेल तर ऑन करून ठेवून दे. हे पाठवू? नाही ठेवू? Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. So welcome all of you in our daily conflict study group. We are seeing the conflict of cancer, the major disease cancer. So today we will see the type of cancer, that is sarcoma. So which diseases are under sarcoma? Yes, so आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है. So what is sarcoma? Which cells with tissues are involved in sarcoma, in sarcomatous growth, and which layer this disease belongs to, and which miasm. Basically, cancer having two miasm, psychotic and syphilitic. The simple benign growth is psychotic. The out of control malignant growth is syphilitic. So sarcomas are rare cancers that develop in the bones. So bones, that means the connective tissues are involved in this, soft tissues are involved in this growth. So most of the bones tumors are sarcoma. So again, including fat, muscle, cartilages, blood vessels, nerves, deep skin tissues, and fibrous tissues. That is supportive and connective tissue. So main involvement of tissues is supportive and connective tissues, depending on where they develop in the body. Yes. So this is sarcoma. It is a third layer disease, that is connective tissues, and types of sarcomas. Basically, there are two types of sarcomas. You can see here the growth in the bones, in the cartilages, and on the skin. So these are the types of sarcomas. स्लाइड आपको दिख रहे हैं? Yes, sir. Okay. So first type of sarcoma is soft tissue sarcomas. Soft tissue sarcomas originate basically of soft tissues. Soft tissues of the body, and are most commonly found in the arms, legs, chest, or abdomen. So these are the parts where soft tissue sarcomas are mostly seen. So soft tissue tumors can occur in children and adults.
So this is the growth in soft tissue. You can see here in the figure. Yes. So this is tumor in the soft tissues. So first type of sarcoma is soft tissue sarcomas or soft tissue tumor. Then second is bone sarcomas. Bone sarcomas are primary bone tumors, which means that they develop in the bones. They are most commonly diagnosed in children. In addition to osteosarcoma, the most common form of primary bone cancer, there are several other types of bone tumors. Yes. So other types like chondrosarcoma, Ewing's sarcoma, and osteosarcoma. So these are the bone sarcomas. Sorry. Yes. Then hematopoietic cells. Yes. So हमने types देखे sarcoma के. Now we will see one by one which type of cells are involved in this growth. तो एक एक सेल के जो भी टिश्यूज इसमें इन्वॉल्व है उसके रिलेटेड डिजीजेस हम अभी देखेंगे. यस. सो ब्लड. So hematopoietic cells. So hematopoietic stem cells. Hematopoietic stem cells are multipotent primitive cells that can develop into all types of blood cells, including myeloid lineage and lymphoid lineage cells. These are two main cells, myeloid lineage and lymphoid lineage cells in the hematopoietic stem cells. So hematopoietic stem cells can be found in several organs, such as peripheral blood, bone marrow, and umbilical cord. So mostly the hematopoietic sarcomas are seen in this part. First peripheral blood, then bone marrow and umbilical cord. So you can see here the hematopoietic stem cells. These white cells are the hematopoietic stem cells. Yes. Now the disease of hematopoietic cells, pre-leukemias. It is benign. Psychosis. So pre-leukemias, myeloproliferative disorder is psychosis benign. And leukemia of various types, or leukemic leukemia, it is malignant syphilitic. So pre-leukemias, it is the psychosis benign, and uske two types, एक psychotic और दूसरा syphilitic is myeloproliferative disorder and then leukemia. So myeloproliferative disorder means क्या? Myeloproliferative disorder are blood cancers caused by changes in the stem cells inside bone marrow, the tissue that makes blood cells. These changes cause the body to make too many blood cells. This excess can be any type of blood cells. That is like white blood cells, red blood cells, or platelets. So this is the myeloproliferative disorder. So these cells are mostly involved in this growth. WBC, RBC, and platelets. Then leukemia.
or a leukemic leukemia. It is malignant syphilitic. So leukemia is cancer of body's blood forming tissue. It is a cancer of blood forming tissues, including the bone marrow and lymphatic system. So there are three types of cells involved in this, tissues involved in this, that is the blood forming tissues, bone marrows, and lymphatic system. Many types of leukemias exist. Some forms of leukemia are more common in children. Other forms of leukemia occur mostly in adults. So a leukemic leukemia is a rare presentation of leukemia in which leukemic blasts are absent in peripheral blood. The malignant white cells invade the skin before they appear in the peripheral blood or bone marrow. This is hematopoietic cells. So hematopoietic cells का ये cancer. Then lymphoid tissue. ये भी blood में ही होते हैं. So lymphoid tissues are organized structure that support immune responses. The bone marrow and thymus are primary lymphoid tissues and the sites of lymphocyte development. The lymph node, spleen, tonsils, and Pear's patches are example of secondary lymphoid tissue. Yes. So these are the lymphoid tissues. You can see in this diagram. कहाँ बॉडी में होते हैं, वहां पे लिम्फोइड टिश्यू का कैंसर हो सकता है. तो हमारा जो हम खाली इसे समझ रहे हैं कि ये क्या है, ये टर्म्स हमारे सामने आएंगे, पेशेंट डायग्नोसिस लेके आता है, तब हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से पार्ट के कैंसर है, इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, ये बॉडी में कहाँ होते हैं, ये सब समझने के लिए ये एक बेसिक हम चीज देख रहे हैं. देन लिम्फोइड टिश्यूज, प्लाज्मोसाइटोसिस. यस, सो प्लाज्मा, it is a benign psychosis. In recent years, an increased percentage of plasma cells in the bone marrow and other tissues of the body has been noted in many diseases other than the primary malignant plasmacystic diseases, multiple myeloma, diffuse plasma cell myelosis, and plasma cell leukemia. These are the most common diseases of plasma. This condition has been termed plasmacytosis. So this is purely psychosis. You can see here cutaneous plasmacytosis. You can see the brown patches on the body, like growth on the skin. This is plasmacytosis. It is benign cancer. Then lymphoid tissue में और plasmacytoma. It is syphilitic, malignant. So plasmacytoma is a tumor of plasma cells of the body, of the bony or soft tissue, and can occur anywhere in the body without evidence of systemic disease. Yes, so it may present as a solitary or multiple mass anywhere in the body. It can progress to multiple myeloma. So this is plasmacytoma. तो हम टू टाइप्स के कैंसर्स देख रहे हैं, टू टाइप्स के ग्रोथ देख रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, पार्ट्स सेल्स ऑफ द बॉडीज एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी. उसमें मेन है बिनाइन एंड malignant. Benign, that is psychotic, and malignant is syphilitic. So हम टू टाइप्स के ग्रोथ देख रहे हैं. साइकोटिक ग्रोथ, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, एंड syphilitic growth, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, which are the more dangerous and which are the less dangerous. Yes, तो हमारे
अप्रोच के लिए ये देखना बहुत जरूरी है. Yes, so you can see here the growth on the bone, that is soft tissue, and on the skin. Yes, so plasmacytoma. Then multiple myeloma. It is syphilitic, malignant. तो ये lymphoid tissues के ही growth है, disease है. Multiple myeloma is a cancer that forms in a type of white blood cells called a plasma cell. Healthy plasma cells help fight infection by making protein called antibodies. Healthy plasma gives protection to us by producing antibodies. Antibodies find and attack germs. In multiple myeloma, cancerous plasma cells build up in bone marrow. So this is the multiple myeloma. तो जब भी पेशेंट इस टाइप के आते हैं, ऑलरेडी वो सब इन्वेस्टिगेशंस लेके हमारे पास आते हैं, तो हमें ये ऑलरेडी डायग्नोस या फिर डायग्नोसिस हमें मिल जाता है, लेकिन वो डायग्नोसिस पर से ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व है, कौन से लेयर के ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, एंड उसका माइजम क्या है. यस, so you can see here in the pictures, see multiple myelomas and on the skin also. Then Hodgkin's lymphoma. Yes, तो देखो lymphoid डिसीज के कितने टाइप्स है, कितने टाइप्स के डिजीजेस है. Yes, so Hodgkin's lymphoma, it is syphilitic, malignant. So Hodgkin's lymphoma is a type of cancer that affect the lymphatic system, which is part of the body's germ-fighting immune system. In Hodgkin's lymphoma, white blood cells called lymphocytes grow out of control, causing swollen lymph node and growth throughout the body. Yes, so this is Hodgkin's lymphoma. तो Hodgkin's lymphoma क्या है, कौन से सेल्स वहां इन्वॉल्व होते हैं, किस टाइप का वो डिजीज है, उसकी ग्रोथ कैसी होती है, ये सब हमें पता होना चाहिए. सो जब भी हम Hodgkin's lymphoma इस कैंसर के पेशेंट देखेंगे, तो किस टाइप का अप्रोच हमें वहां अप्लाई करना है, इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है. यस, सो Hodgkin's lymphoma में क्या क्या होता है, किस टाइप से डिजीज प्रोग्रेस होता है, कैसे उसका अपीयरेंस होता है बॉडी पे, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. Then non-Hodgkin's lymphoma, it is also syphilitic, malignant. Non-Hodgkin's lymphoma is a type of cancer that begins in your lymphatic system, which is a part of the body's germ layer or germ fighting immune system. Yes, तो बॉडी की जो मेन इम्यून सिस्टम होती है, जो हर टाइप का प्रोटेक्शन, हर टाइप का डिफेंस हमें देती है, और वही सिस्टम इस डिजीज में अफेक्ट हो जाती है. सो in non-Hodgkin's lymphoma, white blood cells called lymphocytes grow abnormally. Yes, so जो भी lymphocytes होते हैं, इसमें जो जिनका फंक्शन है बॉडी को सेफ रखना, बॉडी को हर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, वही सिस्टम फॉल्टी हो जाती है, और वहां पे जो लिम्फोसाइट्स है जिसका ये फंक्शन है, वही एबनॉर्मली ग्रो होना शुरू कर देते हैं, एंड कैन फॉर्म ग्रोथ्स, दैट मींस ट्यूमर्स थ्रू आउट द बॉडी. तो पूरे बॉडी पे आपको गठाने दिखेंगे. दिस इज non-Hodgkin's lymphoma. It is also syphilitic. So Hodgkin's lymphoma हो या non-Hodgkin's lymphoma, both are syphilitic. Now, adult fibrous tissue. So what is adult fibrous tissue? इसका क्या होता है?
ये कौन से टिश्यूज है, इसका कौन सा डिजीज है, इसकी कैसे कौन से टिश्यूज कौन से सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किस कौन सी लेयर का ये डिजीज है. So fibrous soft tissue is a connective tissue. Again, the third layer. So like its name, fibrous soft tissue connects parts of your body. For example, your tendons attach muscles to bones. These are fibrous tissues. Your ligaments attach bone to bones. That means muscle and ligaments are the fibrous tissues. This fiber help move body parts and keep them strong and stable. This is the function of these fibrous tissues. Tendons and ligaments are made up of fibrous tissues. Yes. So tendons and ligaments are made up of fibrous tissue. Fibrous tissues is also found in the walls of the blood vessels. मतलब यहाँ पे कौन से organ में ये ग्रोथ हो सकती है, that is tendons, ligaments and the blood vessels, and surrounds many organs. So you can see here in the picture किस तरह से यहाँ ग्रोथ होती है. You can see here the growth, that is, तो ये सब है adult fibrous tissues. Then fibroma. It is a psychosis, psychotic disease, benign growth. Fibroma are non-cancerous tumors made of fibrous tissue. They can occur almost anywhere in and on your body. Most fibrous or most fibroma don't cause symptom. This growth is benign growth and symptomless growth. So fibromas occur for various reasons, but some have unknown reasons. But we want, देखो ये दिया है डिस्क्रिप्शन में कि वो उसमें कुछ ऐसे ग्रोथ्स है जो जिनका कोई पॉजिटिव फैक्टर नहीं होता है, लेकिन each and every growth have positive factor, and mostly that growth is because of insecurity or fear. So 100% fibroma भी positive factor होता है, that positive factor is insecurity. फिर डिपेंड करता है कौन से पार्ट में ये फाइब्रोमा हुआ है, फिर उससे रिलेटेड हमें कॉन्फ्लिक्ट देखना है. Yes, so you can see here in the mouth, see the fibroma on the sole, foot and on the eyelid. So this is the growth of fibroma. It is a benign और बहुत सारे पेशेंट्स इसके मिलते हैं फाइब्रोमा के. Yes. Then fibrosarcoma. It is syphilitic, malignant, out of control growth. एक बार बढ़ना शुरू हो गया तो ये कंट्रोल में आता ही नहीं, इतना कंटिन्यूअसली वो बढ़ते रहता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होते रहता है. So a fibrosarcoma is a malignant cancerous tumor that originate in the connective tissue found at the ends of bones. Yes. So fibrosarcoma mostly occur on the ends of bones of the arms and legs, and then spread to other surroundings of tissues. So fibrous tissues, including soft tissues of connective tissues. So mostly arms and legs having this growth. So you can see here on the hand, on the gums, and on the end of bones, that is in the joint. Yes. So this is the fibrosarcoma.
It is malignant syphilitic growth. Now, embryonic fibrous tissue. Embryonic fibrous tissue. Embryonic को और दूसरा नाम है myxomatous. Myxomatous fibrous tissues. So embryonic connective tissue is found in the early embryos. देखो बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एम्ब्रियो में ही स्टार्ट हो जाता है. So embryonic connective tissue is found in the early embryos and umbilical cord. Chip cells are mesenchymal cells. Mesenchymal cells. It is divided into mesenchyme in embryos, and mucoid tissues, that is umbilical cord. Mesenchyme originates from mesoderm, one of the three germinal layers in the embryos. The myxomatous mitral wall is the now. तो हमने देखा है कि embryonic connective tissue, fibrous tissue कौन से है? Then now we will see the myxomatous tissues, myxomatous fibrous tissues. It is in the mitral wall of the heart. So it is the most common form of valvular heart disease. So this myxomatous tissues gives valvular heart disease. The pathologic presentation of myxomatous mitral wall disease. इसीलिए क्योंकि ये सब एम्ब्रियो में ही होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, तो इसीलिए बाय बर्थ बच्चों को जो भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस होते हैं, माइट्रल वॉल डिजीज होता है बिकॉज ऑफ दिस. सो वेरियस mitral wall disease varies between wall thickness, degree of leaflet prolapse, and the presence of or absence of frial leaflet. Yes, so this is a congenital disease. So this is again a type of sarcoma. Why it include in sarcoma? Because of these fibrous tissues. Yes. So you can see here the mitral wall. You can see here in the embryo, the baby having this mucoid connective tissues, that is myxomatous fibrous tissues. Now, myxoma, it is psychosis, benign growth. So, a myxoma is a benign non-cancerous growth in the heart. Myxomas can be as small as few millimeters or grow to a few centimeters. Most myxomas develop in the area of the heart called
Yes, I am audible. Hello. हाँ सर, Okay. हाँ सर. Sorry for that. My internet access was lost. Yes. Okay. Okay. Yes. So, myxosarcoma. It is a syphilitic malignant. Myxosarcoma is a malignant tumor derived from fibrous connective tissue and is classified as soft tissue sarcoma. It is characterized by an abundant intracellular matrix of mucin or neoplasm of fibroblast origin with an abundant myxoid matrix composed of mucopolysaccharides. These rare tumors occur in middle age or older patients. Yes, so this is a myxosarcoma. It is a syphilitic and very, very rare disease. Then you can see we have cardiac myxosarcomas. Then fat involvement. तो फैट में किस टाइप की ग्रोथ होती है? कैंसरस ग्रोथ, बिनाइन और मैलिग्नेंट. सो फॉर फैट में जो भी ग्रोथ होगी उसे हम लाइपोमा कहते हैं. लाइपोमा, इट इज साइकोटिक, बिनाइन. A fatty lump most often situated between the skin and underlying muscle layer. Yes, तो मोस्टली बहुत सारे पेशेंट्स लाइपोमा के आते हैं. मल्टीपल लाइपोमास, मल्टीपल ग्रोथ उनके अंडर स्किन होती है. तो बहुत सारे पेशेंट्स इसके हैं. जनरली हम उनको चर्बी की गठिया बोलते हैं और बहुत से डॉक्टर्स पहले ही बता देते कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं. लेकिन सॉरी, अगर प्रॉपर अप्रोच लिया गया और उसका कॉन्फ्लिक्ट अगर प्रॉपरली फाइंड आउट किया तो 100% वहां क्योर होता है. So lipomas are slow growing and usually harmless. Yes, symptomless होता है, harmless होता है. बहुत rare patients में painful lipomas होते हैं. Yes, so rarely they can be cancerous. Some people have more than one. Yes, lipomas are just under the skin and move easily when pressure is applied. Yes, these tumors, this growth is movable. They commonly occur in the neck, shoulders, back, abdomen, arms and thighs. तो ये मोस्टली प्लेसेस हैं जहां फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है और वहीं पे मोस्टली ये ग्रोथ स्टार्ट होती है. यस, सो दीज आर द lipomas. This is benign growth. You can see here in the pictures. Then यही ग्रोथ जब सिपिलिटिक हो जाती है, मैलिग्नेंट हो जाती है, कैंसरस हो जाती है, लाइपोसार्कोमा, यस, लाइपोमा
sarcoma. Syphilis malignant. Liposarcoma is a rare type of cancer. Yes. That develops in your fatty tissue. This type of tumor can grow anywhere in your body. Common places include your abdomen, thigh, and behind your knee. Liposarcoma is a malignant tumor. This means your cancer can spread to other areas, including vital organs. So you can see here the back of knee of this thigh, on the thigh and on the back of shoulder. You can see here on the scapula, the big growth. This is liposarcoma. It is malignant. Yeah, syphilitic. Then cartilage. तो कार्टिलेज में किस टाइप की ग्रोथ होती है उसे क्या बोलते हैं? सो कॉन्ड्रोमा, the benign growth of cartilage. Chondromas are benign, not cancerous tumors made of cartilage that are found mostly in the small bones of the hand and feet. They can also occur in the humerus, femur, and ribs. So most common sites for this disease is humerus, femur, and ribs. So you can see here on the fingers, bones of fingers, then this radius ulna, and on the fingers you can see in picture the growth, that is chondroma. Yes, this is benign growth. Then chondrosarcoma, it is malignant. तो जहां जहां sarcoma लगेगा, it is syphilitic. So chondrosarcoma is a type of bone cancer that starts in cartilage cells. Cartilage is the smooth connective tissue that protects the ends of bones and lines most joints. Chondrosarcoma is the second most common type of primary bone cancer in adult. Chondrosarcoma, yes. तो मोस्टली ये जो प्यूबिक बोन होता है, यहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है, यस, और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है मोस्ट रिलेटेड टू सेक्स. तो जहां का सेक्सुअल डोमिनेशन होगा या फिर सेक्सुअल एब्सेंस होगा, उन पेशेंट्स में मोस्टली ये ग्रोथ स्टार्ट होती है. यस, सो दिस इज प्यूबिक बोन एंड you can see on the humerus, femur. Yes, so this is called chondrosarcoma. It is malignant, syphilitic. Then osteoma. It is benign, and osteoma is a new piece of bone usually growing on another piece of bone. Typically the skull. When the bone tumor grows on other bone, it is known as homoplastic osteoma. When it grows on other tissues, it is called heteroplastic osteoma. Yes. So हम बहुत ही अच्छी स्टडी कर रहे हैं. सभी टाइप के ग्रोथ, सभी टाइप के कैंसरस ग्रोथ हम देख रहे हैं. तो आप इजीली किसी भी ग्रोथ का डायग्नोसिस कर सकते हैं. जब भी पेशेंट विदाउट कोई इन्वेस्टिगेशन लेके जब पेशेंट आता है कि उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, यू कैन डायग्नोज दिस पेशेंट दिस ग्रोथ्स. यस, तो हम सभी टाइप के ग्रोथ्स यहाँ देख रहे हैं. तो
आप इजीली किसी भी ग्रोथ का डायग्नोसिस कर सकते हैं। मोस्टली जो बिनाइन होते हैं, जो बिनाइन ग्रोथ होती है, साइकोटिक ग्रोथ होती है, उसके आगे सार्कोमा नहीं लगता। तो जिसके आगे सार्कोमा लगा, दैट इज मैलिग्नेंट। सो you can see here the growth on skull. Yes, this is osteoma. And osteosarcoma is syphilitic malignant. It is a type of bone cancer that begins in the cells that form bones. Osteosarcoma is most often found in the long bones, more often the legs, but sometimes the arms, but it can start in any bone. In very rare instances, it occurs in soft tissue outside the bone. Soft tissue में भी ये देखा गया है. So osteosarcoma, it is syphilitic. We can see here in this joint, knee joint on the femur. Yes, this growth is osteosarcoma. See in X-ray photos. Yes. Then smooth muscle tumors, smooth muscle growth, और smooth muscle growth को क्या कहते हैं? So leiomyoma. Leiomyoma, it is the growth of smooth muscle. It is benign and psychosis. So leiomyomas are known as fibroid, are a group of benign smooth muscle tumors commonly present in premenopausal women. Yes, so premenopausal women में mostly ये leiomyoma growth मिलती है. So these tumors are of monoclonal origin, which arises from the smooth muscle of uterus. Yes, so you can see here in the picture the leiomyomas, the growth of benign growth of smooth muscles. Yes. Then leiomyosarcoma, it is syphilitic malignant growth. So leiomyosarcomas is a type of rare cancer that grows in the smooth muscle. The smooth muscles are in the hollow organs of the body, including the intestine, stomach, bladder, and blood vessels. तो जहां जहां स्मूथ मसल्स हैं वहां पे इस टाइप का ग्रोथ हो सकता है. दैट ग्रोथ इज कॉल्ड leiomyosarcoma. इट इज मैलिग्नेंट. नाउ स्ट्रेटेड मसल. सो स्मूथ मसल देखे हमने. नाउ स्ट्रेटेड मसल्स. सो स्ट्रेटेड मसल का ही पार्ट है जिसमें rhabdomyoma, the benign growth, this benign growth called as rhabdomyoma. A rhabdomyoma is a non-cancerous benign tumor that typically grows in clusters in the heart. Yes, so striated muscles हार्ट में होती है, इसलिए वहां पे ये जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को कहते हैं rhabdomyoma. Rhabdomyomas are the most common type of cardiac tumor seen in infants and children. Cardiac rhabdomyomas usually grow in the muscle of the left and right ventricles, the lower chamber of the heart. Yes, you can see here the growth in the heart. The first picture you can see the ball-like growth. This is called rhabdomyoma. Yes, so जब ये हार्ट में होती हैं तो उसका आप इजीली कॉन्फ्लिक्ट निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रोथ हुई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लव. यस, सो इसीलिए ये बच्चों में पाया जाता है. तो जो बच्चे, जिन पेरेंट्स को प्रेगनेंसी रहने के बाद, कंसेप्शन होने के बाद वो कंसेप्शन कैरी ऑन करना नहीं है, वो चाहते नहीं, वो प्रिपेयर नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, दैट्स व्हाई दे डोंट लव दैट प्रेगनेंसी. तो उन बच्चों में मोस्टली ये चांसेस होते हैं rhabdomyoma के. यस, नाउ rhabdomyosarcoma.
it is syphilitic, malignant, and mostly in the eyes, you can see this rhabdomyosarcoma because of stated muscle. तो आई में हमने पढ़ाई है कि stated muscle किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, और उसमें ये ग्रोथ मिलती है. So rhabdomyosarcoma, it is malignant and syphilitic, is the most common of soft tissue sarcoma in children. These tumors develop from muscle or fibrous tissue and can grow in any part of the body. The most common areas of the body to be affected are around the head, neck, bladder, testes, womb, and vagina. Yes. So you can see here the growth of rhabdomyosarcoma. It is malignant growth. Yes. So these are the diseases of connective tissues called as sarcoma. Yes. So आज का सार्कोमा टॉपिक आप लोगों को कितना अच्छा लगा? यस. बताइए. फिर हम इस सभी डिजीज के कॉन्फ्लिक्ट देखने वाले हैं. अभी और भी कुछ पार्ट्स बाकी हैं कैंसर्स के, वो कंप्लीट करने के बाद फिर सब एक लाइन से मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट दूंगा. हर डिजीज का कॉन्फ्लिक्ट हम देखेंगे. मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा आपको इसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप जब भी आप, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन, ये खाली अंडरस्टैंड करना है हमें कि ये डिजीज किस टाइप का डिजीज है, इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व है, कौन सी लेयर इन्वॉल्व है, और इसका मायाजम क्या है ना, साइकोटिक है कि सिफिलिटिक है. इसके साथ मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं बता रहा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का ही मोस्टली हमें काम पड़ता है. तो कॉन्फ्लिक्ट हम पूरे एक लाइन से मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको फिर ओनली कॉन्फ्लिक्ट देखना है. इस टाइप का अगर पेशेंट आता है तो फिर उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फिर आप पट से कॉन्फ्लिक्ट देख के एनालिसिस कर सकते हैं. हिस्ट्री में भी आपको बहुत इसकी हेल्प होगी. यस. तो किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो फास्ट आप पूछ सकते हैं. हेलो सर. यस. सचिन. यस, बोलो सचिन. सर प्लेटलेट्स आज डाउन था सर, प्लेटलेट कराए थे, प्लेटलेट जो है 1 लाख आ गया सर. कितना है? 1 लाख. 1 लाख है ना? हाँ सर. ओके, नो प्रॉब्लम. 185 से 145, 145 से 1 लाख हुआ सर 3 डेज में. ओके. और टेम्परेचर? टेम्परेचर नहीं आ रहा है सर कल से. ओके. आपका ये कैसा है, इलनेस कैसा है? इलनेस सर ठीक है, जनरल वीकनेस है. तो वीकनेस कल से ज्यादा है कि कम है? कल से कम है सर, कल से बेटर है. ओके. तो फिर आप उसका एक करो ना, एक प्लसिंग डोज ले लो. एक और ले लें. एक डोज ले लीजिए. ठीक ठीक. ओके. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. यस. एनीबडी? और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. मैंने सेमिनार में अपने सुना था कि जो लाइपोमा है, ये लाइपोमा कैंसरस नहीं होते क्योंकि उसके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता. यस. तो कैंसर में कन्वर्ट, मैंने मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो बेनाइन टाइप के रहेंगे. यस. जब देखो, कैंसरस दैट मीन्स बिनाइन एंड मैलिग्नेंट है ना. तो कैंसर के 2 टाइप है, बिनाइन एक मैलिग्नेंट. बिनाइन तभी बिनाइन हम उसी को कहते हैं कि जो कंट्रोल में है, जो हुआ लेकिन कंट्रोल है, और जो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मल्टीपल उसका सेल्स का डिवाइडेशन हो जाता है, तब वो मैलिग्नेंट बन जाता है. फिर उसका एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में
क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्टार्ट होना, इट इज सिपिलिटिक। तो ये डेंजरस नहीं है लाइफ के लिए, लेकिन वो सिपिलिटिक है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, और कैंसरस है ना, क्योंकि कैंसरस के अंदर दोनों भी आ रहे हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। तो अभी हमने लाइपोमा में देखा है कि कौन सा लाइपोमा बिनाइन है और कौन सा मैलिग्नेंट है। तो हमें मैलिग्नेंट में वही रूब्रिक लेना है जो प्योरली सिपिलिटिक है। यस यस सर, थैंक यू सर। हेलो, यस यस सर। मेरे को ये पूछना था, हनीमैन साहब के जमाने में उस टाइम पर इतने इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज कुछ भी नहीं थी। यस सर। तो मियाज्मेटिक थ्योरी का उन्होंने उनके समय कैसा वापर किया, और साइकोसिस और सिफिलिस, बिनाइन और मैलिग्नेंट, इसमें कैसे वो डिफरेंस करते थे और उनका अप्रोच कैसा रहता था? यस सर। तो उन्होंने सिंपली मतलब जो सोरा साइकोसिस सिपिलिस का उन्होंने जो कंसेप्ट रखा है, तो जो बिनाइन है, बिनाइन का मतलब जो ओनली ग्रोथ हो रही है, जहां डीजनरेशन नहीं है, जहां डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है सेल्स का, वो जहां हो नहीं रहा है वो बिनाइन में आएगा, और जहां डिस्ट्रक्शन हो रहा है सेल्स का, डीजनरेशन हो रहा है, सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल वहां पे जनरेशन हो रहा है, वो सिपिलिटिक में लिया। इसलिए वहां पे इतने इन्वेस्टिगेशन नहीं होने के बाद भी ओनली उन्होंने सिंपल टर्म्स वहां पे लगा दिए कि साइकोटिक में क्या क्या आएगा और सिपिलिटिक में क्या क्या आएगा। सिंपल ग्रोथ है जो 1:2 हो रहा है और लिमिटेड है, अंडर कंट्रोल है, वो सब साइकोसिस में जाएगा। लेकिन जो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जहां डीजनरेशन हो रहा है, जहां अभी म्यूटेशन तो तब नहीं समझ में आया, म्यूटेशन अभी समझ में आ रहा है कि भाई जिन म्यूटेशन हो रहा है इसकी वजह से कैंसर हो रहा है, तो म्यूटेशन, ऑल म्यूटेशन चले जाएंगे सिपिलिटिक में। तो हमें ओनली उसका मायाजम को अंडरस्टैंड करना है कि साइकोसिस में क्या जाएगा और सिपिलिटिक में क्या जाएगा। फिर ये अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हमें ये अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करना है सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स में। तो अगर साइकोटिक है, मोस्टली साइकोटिक में भी हमें सिपिलिटिक ही रूब्रिक देखना है, लेकिन अगर वहां पे बहुत से डिजीज में ऐसा होता है कि सिपिलिटिक रूब्रिक्स बहुत से पेशेंट में मिलते नहीं है, तो हमें कुछ डिस्पोजिशन, कुछ रिएक्शन और पॉजिटिव फैक्टर लेके रूब्रिक हम ले सकते हैं ओनली साइकोटिक में। लेकिन जो सिपिलिटिक केसेस होते हैं उसमें मोस्टली हमें सिपिलिटिक ही रूब्रिक लेना है, वहां पे साइकोटिक गलती से भी नहीं लेना है। यस। और ऐसे कई केसेस ऐसी भी रहती है आज के डेट में भी कि बस समझो फॉर एग्जांपल इनसाइड द एब्डोमेन मैजिक बॉक्स है, वहां कोई बिनाइन भी ग्रोथ रह सकती है, मैलिग्नेंट भी रह सकती है। टू स्टार्ट विथ वहां पे छोटा सा कोई ट्यूमर है मैलिग्नेंट, जो कि हमने इन्वेस्टिगेशंस करके प्रूव नहीं किया है। तो ऐसे इसमें क्या समझो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो रूब्रिक हमारे को मैलिग्नेंट मिलते हैं तो मैलिग्नेंट ही ले लेना चाहिए हमने? यस सर। इसको मैं और थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ। जो जो केसेस में डायग्नोसिस नहीं हुआ, वहां पे बायोप्सी नहीं हुई, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, तो वहां पे पता ही नहीं चलेगा कि ये ग्रोथ साइकोटिक है कि सिपिलिटिक है, मतलब बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। तो ऐसे केसेस में मोस्टली एक ही अप्रोच रखना है कि जो भी लेना है सिपिलिटिक लेना है, स्ट्रॉन्ग सिपिलिटिक रूब्रिक्स हमें देखना है। फिर उसके पूरे माइंड, फिजिकल, जनरल्स में जो भी सिपिलिटिक मिलेगा, या फिर जो भी उसके बिहेवियर से हमें जो मिलेगा, या फिर डिजीज पैथोलॉजिकल जो भी एक आधा सिपिलिटिक रूब्रिक्स अगर वहां पे है तो वो हमें पिकअप करना है। क्योंकि अभी बहुत से केसेस में सर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते, और अभी तो पेशेंट का अवेयरनेस ये हो रहा है कि बहुत से पेशेंट डरते हैं बायोप्सी के लिए, तो वहां पे बायोप्सी करते नहीं और ग्रोथ बढ़ते जाती है। अभी अभी एक लेडीज मेरे पास आई थी जिसके टंग पे बहुत बड़ा ग्रोथ था, तो मैंने उनको पहले ये बोला कि आप बायोप्सी करके आओ, क्योंकि ये सिपिलिटिक है कि ओनली बिनाइन है समझ में नहीं आएगा। तो जब उन्होंने वो करने के लिए तैयार ही नहीं थी, उन्होंने एक्चुअली 2-3 डॉक्टर इसी वजह से चेंज किए कि उनको सभी ने बोला कि बायोप्सी करो, लेकिन उन्होंने किया नहीं। फिर लास्ट में मेरे पास आने के बाद मैं भी वही बोल रहा हूँ उनको, वही सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई बायोप्सी करो ही, आप करना ही पड़ेगा। तब जाके वो बायोप्सी करने गए,
बायोप्सी करने के बाद वो ग्रोथ के सेंटर में से उन्होंने कुछ एक पीस निकाला, तो वहां पे और एक डीप अल्सर तैयार हो गया, एक डीप वुंड तैयार हो गई। तो वो रिपोर्ट आने तक 3-4 दिन लगे, तो 3-4 दिन में वो पूरा व्हाइट बन गया था। मेरे पास आए, मैंने देखा वो, तो वो रिपोर्ट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा था। वो देखने के बाद जब मैंने उनके सिम्टम्स लिया, उनकी पूरी हिस्ट्री पे से देखा, और वो उसने वो भी देखा कि ये कितनी मतलब कवार्ड लेडी है, कितनी फियरफुल है, टिमिड है, तो उस पर से भी कुछ रूब्रिक्स ले, मेडिसिन दिया। तो 3 दिन में उनका जो व्हाइट पूरा व्हाइट बन गया था वो कंप्लीटली रेड हो गया, और जो उनकी ग्रोथ एक्सपांड हो गई थी वो ऐसी थोड़ी सी श्रिंक हो गई थी। तो मोस्टली हमें सिपिलिटिक रूब्रिक्स मतलब मायाजम क्या है ये देखने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन भी करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन अगर होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि बायोप्सी करने के बाद ग्रोथ और फास्ट ग्रो होती है, लेकिन अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हम देंगे वहां पे मेडिसिन वो अगर परफेक्ट है तो वो बढ़ेंगी नहीं, वो कंट्रोल में आना ही है। और अभी उस पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ है सर। ओके, यस, यस। और ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन, या फिर हम यस, डॉक्टर अतुल महाजन सर ने क्वेश्चन डाला है कि डॉक्टर विजयकर सर अवॉइड बायोप्सी फॉर अवॉइड फर्दर फास्ट डिस्ट्रक्शन। यस, ये कब आपने अगर उसे मेडिसिन दिया है, मेडिसिन देने के बाद पेशेंट अगर बायोप्सी करता है तो वहां पे ग्रोथ 100% फास्ट ग्रो होगी, लेकिन बिफोर योर ट्रीटमेंट अगर आप बायोप्सी करवाते हैं फिर आप ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर वो कंट्रोल में आ सकता है, वहां पे फास्ट ग्रोथ नहीं होगी। यस, तो ये बिफोर एंड आफ्टर का ध्यान में रखना कि आफ्टर योर रेमेडी अगर वहां पे कट होता है तो ही वहां पे फास्ट ग्रोथ होगी। यस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल कल नहीं, अभी मंडे को हम मिलेंगे। ओके, यस, थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. यस, बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी